Now I'll start the topic that is called as Viscosity. viscosity. Very easy. ठीक है, direct. This is entirely empirical concept. Empirical मतलब experiment से formula आया है, वो formulas वगैरह हमें याद रखना है. हाँ. ठीक है. A very straightforward topic. बहुत ही ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है इस topic. ठीक है. Nothing like surface tension जो कि मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. So आप बता सकते हैं what is viscosity? This viscosity is friction of liquid. Friction of fluids is called as viscosity. ठीक है. सॉलिड सरफेस का फ्रिक्शन हमने पढ़ा है, सॉलिड सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन हमने पढ़ा है, लेकिन सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड लिक्विड के बीच का फ्रिक्शन हमने नहीं पढ़ा है. It acts between solid and liquid contact or liquid liquid contact. ठीक है. Right. See, this viscosity, it's a very pretty straightforward topic. बहुत ही आसान सा टॉपिक है यहाँ पे. तो ये होता क्या है, क्यों होता है? तो बेसिकली हम लिक्विड को ना, वी कंसिडर फ्लूइड्स टू हैव मल्टीपल लेयर्स, and when they flow, a layer exerts friction on another layer. Okay, Gurashil. Like यदि हमारे पास एक लिक्विड है, like से रिवर है या कुछ भी है, तो हम मानते हैं कि this is made up of number of layers. Right. और सारे लेयर्स फ्लो कर रहे हैं, V1, V2, V3. तो बेसिकली सबकी वेलोसिटीज अलग हैं. ठीक है. एक्चुअली में सबकी वेलोसिटीज अलग होती है, लेकिन हम मान लेते हैं सबके वेलोसिटीज सेम होते हैं. हम अज्यूम करते हैं देयर इज नो फ्रिक्शन. तो ये सारे लेयर्स जो है ना, अलग अलग वेलोसिटी होते हैं. V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3. यदि नीचे में सॉलिड सरफेस है, तो यहाँ सबसे लास्ट में जो होगा वो लाइक यहाँ पे Vn, दिस विल बी 0. सॉलिड सरफेस से कांटेक्ट में. Understood? Yes. So based on the experiment, force of viscosity, this was given by F is minus eta A dV by dx. ठीक है. Eta is called as coefficient of viscosity. A is the area of contact. यदि कोई solid contact में, तो कितना area contact? That is area of contact. dV by dx, this is change in velocity. Change in velocity per unit depth. Got it? This is called as dV by dx is called as velocity gradient. Right. This is the unit of this viscosity. ये जो viscosity है, coefficient of viscosity है, इसका unit आप easily पता कर सकते हैं. Force divided by A dV by dx. Right. Fine, but the SI unit is decapoise. SI unit is decapoise, and CGS is poise. Deca means 10. I hope you understand decapoise. Yes. Okay, so this is the formula of viscosity. So suppose if I give you that, let's say there is a layer. ठीक है. There is a layer of liquid. एक solid surface है. There is liquid. There is a, let's say, slab.
wooden slab, and this is slab height. This is moving on the liquid surface. The Right. area is A. This height is H. ये जो height है ये H है. The slab is moving with constant velocity V naught. Find Right. the force that we should apply. We should apply on it for it to move with constant velocity. कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी मूव v नॉट से मूव कर सके. एरिया इज a एंड टेक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एज बीटा. सो इधर की तरफ हमें f लगाना पड़ेगा, तो इधर की तरफ एक विस्कस फोर्स f भी लग रहा होगा. तो f इज इक्वल टू f भी हो जाएगा एंड दैट इज माइनस बीटा a. मतलब हमें मैग्नीट्यूड बस पता करना है. माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इट इज ऑपोजिट एंड दिस इज v बाय h. हम ये अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे v था और धीरे धीरे करके लीनियरली ये आके यहाँ पे 0 हो गया. So I put the velocity gradient as v by h approximately.